Good morning, students. I hope you all are doing well at your places. And today we'll be studying about tenses. What are tenses? Tenses basically tells us about the time. आज का time, that is the present time, जो चला गया past time, and of course the coming future time. So let's just begin with this tenses. Title of our chapter is the tense. There is a warm up exercise. You have to answer the following question. In which class did you study last year? Last year में आप कौन सी class में थे? Do you study this year? इस year में कौन सी में? और next year में आप कौन सी class में होंगे? You will write your answer over here respectively on your own, right? So the word tense का मतलब क्या होता है? Time. It tells us the time of an action कि action कब हुआ है. That is we did, we do or we will do. हम करेंगे या फिर कर चुके हैं या फिर कर रहे हैं. There are three types of tenses: present, past and future, right? These tenses are further divided into four tenses से divide होते हैं, जैसे कि simple tense, then comes the continuous tense, and of course then comes the perfect, and of course it's the perfect continuous tense, right? In this class you will study about simple tenses and continuous tenses के बारे में हम पढ़ेंगे. First is simple present tense. Simply जब आपका काम अभी हो रहा है. We use the simple present form of verb. इसका मतलब होता है as, do or does, work or works, brush or brushes, read का reads, to talk about that things that we do repeatedly or in the habit or in a routine जो हम रोजाना करते हैं, right? You just read the frogs family. Frogs की family का daily routine हम पढ़ते हैं. So there is a Mr. Frog and Mrs. Frog. They love their garden. उनको अपना garden बहुत ज़्यादा पसंद था. They keep it clean and beautiful. उसको बहुत ही ज़्यादा साफ रखते थे, right? And every day Mr. Frog get up early. वो जल्दी उठ जाया करते थे. He goes to the river nearby. साथ में जो river है वहाँ जाया करते थे. He brings water in a bucket. बाल्टी में पानी लेकर आया करते थे. He water the plant. पानी को पौधों को पानी दिया करते थे. Mr. Frog joins him later. और Mrs. Frog जो है उन्हें बाद में join करती थी. And they water the plants together. और वो एक साथ प्लांट को पानी दिया करते थे. There is a fact file that we use SES to the first form of verb, or you can say singular subject से हम use करते हैं. We use only first form of verb if the subject I, we, you, they, or you can say they are plural nouns, right? Moving on to the exercise, you have to take the correct suitable given in the मतलब you have to take the suitable verbs that are given in the bracket. So let's just begin. Shivi dance well. Shivi dances well, right? Aman loves chocolate. Aman को बहुत ज़्यादा पसंद है. The cow eats grass. Manu writes a letter. Manu writer लिखती है. Our school it will opens at 9 o'clock and they dash food grain. They grow food grains, right? We enjoy playing games and the baby cries for milk. The baby cry for milk. Baby जो है cry कर रहा है milk के लिए. Then comes the fill in the blanks with the correct form of verb. Aman and Naman dash their homework every day. Aman और नमन दो जने हैं does their homework. Jyoti dash her hair every morning. Jyoti washes her hair. The sun gives us light and heat. They dash the poor people. They helps the poor people. My sister dash me with the lessons. My sister helps me with the lessons. Many animals dash in the jungle. Many animals they lives in the jungle. She dashed the answer. She knows the answer. I dash with a pencil. I write with a pencil. Right? Moving on to the present continuous tense. Continuous है बस ing लगा दीजिए. Right? When we talk about the things happening at the same time of speaking, मैं बोल रही हूँ और अभी भी हो रहा है वो काम, you use, then at that time we use present continuous form of verb. जैसे कि I am reading a book. मैं अभी book read कर रही हूँ. He is watering the plants. वो plants को water कर रहा है. And they are playing football. वो लोग football खेल रहे हैं. Study the table. I am reading. मैं read कर रही हूँ. He is laughing. वो हंस रहा है. She is dancing. वो डांस कर रही है. अभी is playing. अभी खेल रहे हैं. Kanchan is drawing. She is just doing an art. You are jumping. तुम कूद रहे हो. We are sleeping. हम लोग सो रहे हैं. And they are writing. वो लिख रहे हैं. There is a fact file that we use am plus v. INGM verb की ing and only with I के साथ सिर्फ use करेंगे plus and v और ing it is used with the singular as well as the plural noun. And r क्या होता है? v और ing plus you can say मतलब v के साथ ing और plural form के लिए use होगा. जैसे कि you have to take the correct the options. You will be doing the exercise. The man is sitting on the chair. बंदा जो है चेयर पे बैठा हुआ था. Birds are, बहुत सारी birds हैं. We are, right? People are walking in the street. A kite is, एक kite की बात हो रही है, right? You have to do the fill in the blanks with a present continuous form of verb and do not forget to use this. जैसे कि again I'll be writing this that I am eating, right? My friends are calling me, right? And it is raining outside.
हिमानी एंड रिया दे आर गोइंग, दो जने हैं इसलिए वी आर यूजिंग आर. द चिल्ड्रंस दे आर मेकिंग नॉइज, चिल्ड्रन के साथ एस नहीं आएगा बिकॉज चिल्ड्रन ऑलरेडी एक प्लूरल है. आउच, यू डैश ऑन माई टो, यू स्टेप्ड, you are stepping, because it is continuous, so we have to keep in mind कि हमको ing लगाना है, right? Then moving on to this, that is simple past tense के बारे में हम पढ़ेंगे, right? So this tense basically tells us the action जो है it took place by before we are speaking. हमारे बोलने से पहले ही action हो चुका है. जैसे you will be reading and understanding. I bought a pen, मैं पेन लेकर आई थी. She bought a book, वो बुक कर लेकर आई थी. They bought apples, वो एप्पल लेकर आते हैं. And children bought a ball and of course a bat, एक बॉल और बैट लेके आए. So in the above sentences जो verb है bought, it tells us कि action जो है it took place in the past time, वो past tense में हो चुका है, and hence the sentences they are in simple past tense, right? There is a fact file that we use the past tense form of verb. सारे types of subject से हम use कर लेंगे. जैसे we usually add d or d ed to the verb to change it from simple past tense से उसको change करना है तो हम d या फिर ed लगा देते हैं. जैसे कि walked, then it's talked, it's danced, right? Wanted, lived, revised, right? We do not add d or ed to some verbs, कुछ में add नहीं करते हैं because they have a different past form of their own. उनकी खुद की past form होती है. जैसे go का went होता है, think का thought होता है, teach का taught होता है, bring का bought होता है, write का wrote होता है, drink का drank, eat ka ate, and sleep ka slept, weep ka wept. Moving on to the exercise, first we'll be completing with the past form given below. Dash, dad dash me how to use the computer. यहाँ पे आप देखिए हमें पास्ट करनी है. यहाँ पे देखिए कहीं पे टीच लिखा हुआ है तो टीच का क्या कर देंगे हम, टॉट. द बेल डैश लाउडली, अब यहाँ देखिए कहीं पे रिंग लिखा होगा, रैंग लिख देंगे हम. देखिए एवरीवन sang and danced at the picnic. The tortoise dashed the race, win का हो गया वन. The player dashed down, the player fell down. ये देखिए ये fall लिखा है, ये fell हो जाएगा. And dashes and hurted, उसने अपनी चोट लगा ली अपने पैर पे, टांग पे. Somebody stole my purse, बिल्कुल सही है. He carried a large bag. And they dash up early, that is they woke. यहाँ पे wake कहीं पे होगा, ये रहा, right? मूविंग ऑन टू दिस पास्ट कंटिन्यूस, वॉट एवर पास्ट की जो भी फॉर्म होती है उसके साथ ing लगाइए. व्हेन वी टॉक अबाउट थिंग्स वी आर गोइंग ऑन बिफोर सम टाइम, कि हम कुछ टाइम पहले ही हुआ है, एंड वी यूज दिस पास्ट कंटिन्यूस टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब. जैसे कि यू जस्ट हैव टू रीड एंड अंडरस्टैंड. आई वॉज ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा था. शी वॉज कुकिंग फूड, वो खाना बना रही थी. दे वर गोइंग टू मार्केट, वो मार्केट जा रहे थे. एंड द बर्ड्स वर फ्लाइंग इन द स्काई, बर्ड्स फ्लाई कर रही थी स्काई में. देयर इज अ फैक्ट फाइल दैट वी यूज्ड वर्ब के साथ ing विद आई शी ही के साथ और सिंगुलर के साथ, एंड वी यूज वी ing वर्ब के साथ ing विद यू एंड विद ऑफ कोर्स विद द प्लूरल नाउन्स, राइट? मूविंग ऑन टू द एक्सरसाइज, फर्स्ट विल बी कंप्लीटिंग विद टिक द करेक्ट ऑप्शन. नीतू डैश, नीतू वॉज, एक जने की बात हो रही है. एनिमल्स बहुत सारे हैं इसलिए दे वर आएगा. ही के साथ वॉज आएगा, टर्टाइज के साथ वॉज आएगा, एंड द गर्ल्स के साथ वर आएगा. मूविंग ऑन टू दिस, दैट इज सिंपल फ्यूचर. यू जस्ट हैव टू यूज शैल एंड विल. Simple future tells it is used to express an action which is expected to take place in the coming time or and of course the future time में. जैसे कि I shall buy a new car, मैं एक नई कार खरीदूंगी. You will play games, तुम गेम्स खेलोगे. They will eat food, right? And we shall win the race, हमको ही win करनी है रेस को. Above sentences में जो verb है colored में, they show कि above action will be done in future, yes, in the coming time, and that is why these verbs are known as simple future tense. There is a fact file, we use shall with the first form of verb, only with I और we के साथ हमेशा shall use करते हैं और verb की first form, and we use will with the first form of verb, and of course all with the pronouns as well as nouns. Moving on to the exercise, you have to fill in the blanks. Farmer dash plow his field, farmer will plow his field, right? The fisherman will catch the fish. I shall do my homework, मैं अपना काम खुद कर लूंगी. He will plant a tree in front of his house. We shall go for a walk. She will cook the food and father will go to the office yesterday. और I के साथ क्या आएगा, shall, right? Then again moving to this, that is future continuous tense. Future के साथ बस आप ing लगाइए. Basically it tells us that action will be going
on the coming time, उस टाइम पे होगा, कल होता ही चला जाएगा, और of course with the future time, right? You just read and understand. I shall be reading the रामायण, मैं रामायण की बुक पढ़ूंगी. We shall be playing match tomorrow, हम कल मैच खेलेंगे, right? He will be washing the clothes, वो कल कपड़े धोएगी. And the mother will be buying a साड़ी, वो साड़ी buy करेंगे. So the verbs which are printed in color में हैं, it tells us that action will be going on the coming time or future time में होगा, and hence it's a future continuous tense. There is a fact file कि shall के साथ ing form of verb with I और V के साथ ही, और बाकी के साथ will be और ing form of verb with all other forms of nouns and pronouns, right? Moving on to the exercise, first we'll be doing the fill in the blanks, जिसके अंदर हम future continuous tense का एक सही उपयोग कर सके, right? The dog dash at the strangers, the dog will bark at the strangers, right? Mother will make food, mother will eat food. यहाँ पे हमको verb दे रखी है, right? The servant dash from milk from the market, the servant will bring, जो हमारा servant है, it will bring milk from the market. The cobbler dash our shoes, the cobbler will mend our shoes. The potter will make earthen pots, वो मिट्टी के pots बनाएंगे. The leader will deliver the speech, right? So that was all about tenses. Please make sure that you will be revising, because it is the stepping stone towards all the parts of speech. And please keep doing reading at your places and keep revising the previous concepts, and stay blessed. Thank you.